Hello students, so in this video I am going to explain about the circulation of blood. Okay, so circulation of blood, as we already know the parts of the heart, so it will start from the vena cava. Vena cava, okay, deoxygenated bloods enter. Deoxygenated blood means impure blood enter into the right atrium. किसमें enter करेगा? Into the right atrium. Okay, it will enter into the right atrium through the superior and inferior vena cava. From right atrium, blood enters the right ventricle. It will enter into the right ventricle with the help of tricuspid wall. With the help of tricuspid wall, okay, then from right ventricle deoxygenated blood is pumped out to the lungs. क्यों लंग्स में जाएगा? बिकॉज एज वी नो लंग्स कंटेन ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई जो ऑक्सीडेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन होगा दैट ओनली टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स. ओके, सो फ्रॉम हियर द ब्लड पम्प्ड आउट टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. सो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी नाउ द ब्लड एंटर्स इनटू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन. ओके, into the lungs for oxygenation. अब क्या होगा कि ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, वो इसमें आएगी इनसाइड द लंग्स, एंड लंग्स से जो ऑक्सीजन होगी, ओके, वो आ जाएगी ब्लड में. ऑलराइट, सो नाउ द ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड. सो यहाँ से यहाँ तक ब्लड कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड, बट नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी पम्प्ड इनटू द हार्ट. Now student, the oxygenated blood with the help of pulmonary vein, okay, with the help of pulmonary vein from lungs is carried into the left atrium, is carried into the left atrium. Okay, then student, from left atrium, okay, from left atrium now the oxygenated blood from left atrium enters into the left ventricle. It will enter into the left ventricle with the help of bicuspid wall, with the help of bicuspid wall. Okay, now from left ventricle it will enter into the aorta. It will enter into the aorta. Alright, so from the left ventricle the oxygenated blood is pumped out through the aorta, which takes the blood to the whole body. It will take the blood to the body. It will take the blood to the body. Then बॉडी थ्रू द आर्टरीज. जितनी भी चीज़ें यहाँ से सेंड होंगी वो सारी किसके थ्रू होंगी? आर्टरीज के थ्रू. मतलब फ्रॉम एओर्टा lots of arteries are distributed and will distribute the blood into the body parts. Okay, now in the body capillary network allows exchange of gases. तो बॉडी में जो कैपिलरी नेटवर्क होगा वो ब्लड के एक्सचेंज में हेल्प करेगा. और ब्लड का एक्सचेंज इन द सेंस कि गैसियस एक्सचेंज, बिकॉज एज दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन ऑक्सीजन. ओके, और हमारी सेल्स में जो रेस्पिरेशन होगा उसका प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड. सो बॉडी से जो बॉडी सेल्स हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा और ब्लड से जो ऑक्सीजन होगा वो बॉडी सेल्स में आएगा. ओके, देन स्टूडेंट द फाइनली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, मतलब बॉडी से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में फ्लो होगा तो द ब्लड विल बिकम ब्लड विल बिकम deoxygenated and will flow out through the veins and is returned to the heart through the vena cava. Okay, so body से जो capillaries होंगी, okay, capillaries will carry deoxygenated blood. They will carry deoxygenated blood. They will carry deoxygenated blood flows out through veins and is returned to the heart through with the help of or through the help of vena cava. Okay, so this is the circulation of blood. It will start from vena cava, then right atrium, then right ventricle, then with the help of pulmonary artery it takes out the blood into the lungs where gaseous exchange takes place. Then after the purification of blood will become oxygenated. Now the oxygenated blood is pumped into the left atrium with the help of pulmonary vein, and then left atrium will
will pump the blood into the left ventricle with the help of bicuspid valve. Now this left ventricle will distribute the blood with the help of aorta into the body. Now body will take, means cells will take oxygen from the oxygenated blood and will send carbon dioxide to the blood, and then this blood will become deoxygenated, and now the deoxygenated blood will pumped out into the vena cava with the help of veins. Okay, and then again this deoxygenated blood will reach into the heart, and then all this process will continue as it is. All right, thank you, take care.